कविता संग्रह ही क्यों नहीं ले लेते? हाँ, वो पूरा मतलब उसमें से कैसे कितना पढ़ेंगे ये कुछ, इसलिए मैंने सोचा निकाली हुई हो तो आसानी से पढ़ी जाती है। संग्रह में जरा अभी लग रहा है कि और थोड़ा चुनाव होना चाहिए, ज़्यादा हो जाएंगे। देखेंगे, चलते हैं। संग्रह में 2 कविताएं हैं जो इसमें शायद नहीं है, जो पढ़ी जाएंगी संग्रह से बाकी 2 3। हरी दाढ़ी वाला कुत्ता की वही वाला ग्रे कुत्ता दिखेगा ना, और अच्छे भी नहीं। पहली कविता है लगातार। एकाएक अपने पैरों को देखा तो भर उठी दहशत से। एकाएक अपने पैरों को देखा तो भर उठी दहशत से। बरसों पहले जहाँ गाड़ा गया था वहीं खड़ी थी मैं। जिसका जो मन आया टांगता चला गया, थैला, टोपी, अंगूछा या अपनी थकान, और लगता रहा सारे वक्त कि मैं चलती रही हूँ लगातार। एक और कविता है अवाक। अपने ठूठ में कोपले फूटने के अनुभव को कहने की लगातार कोशिश करती रही है वह। अपने ठूठ में कोपले फूटने के अनुभव को कहने की लगातार कोशिश करती रही है वह। कहते कहते हर बार कोपले फूटने लगती और अवाक ताकते रह जाते शब्द। एक छोटी सी कविता है भीतर तक। अपने ही अंधकार को उलीटते उलीटते त्रस्त और थकी हुई आत्मा उग आती है शरीर की सतह पर। अपने ही अंधकार को उलीटते उलीटते त्रस्त और थकी हुई आत्मा उग आती है शरीर की सतह पर। घास की तरह चूसती है उजाले को अपनी नोक से और जगमगा जाती है भीतर तक। एक 5 छोटी छोटी कविताओं का समूह है हवा पे। आँख उठाकर देखा सामने हवा थी। आँख उठाकर देखा सामने हवा थी। मुझको पेड़ दिखा रही थी कि देखो यह पेड़ है, ऐसे होता है पेड़। दूसरी है खिलखिल अचानक हरी हंसी से भीग गया कमरा। खिलखिल अचानक हरी हंसी से भीग गया कमरा। उझक कर झांका, हवा पेड़ को गुदगुदा रही थी और पेड़ खिलखिला रहा था। तीसरा है ठिठक गई मैं पेड़ के पास, हवा डगाल पकड़कर झूल रही थी हवा में। क्या बात है। चौथा है पेड़ को बोलना सिखा रही थी हवा। बोलो आ, बोलो का, बोलो श। पेड़ दोहरा रहा था, बात हवा की थी, पेड़ कह रहा था। और आखिरी टुकड़ा है लगातार दौड़ने के बाद पेड़ से टिक कर सुस्ता रही थी हवा और पेड़ टकटकी बांधे देख रहा था। ये कविता है तो विजुअल जैसी है एक्चुअली। इसमें से कुछ थोड़ी सी कविताएं और औरत। प्यार के क्षणों में कभी कभी ईश्वर की तरह लगता है मर्द औरत को। प्यार के क्षणों में कभी कभी ईश्वर की तरह लगता है मर्द औरत को। ईश्वर ईश्वर की पुकार से दहकने लगता है उसका समूचा वजूद। अचानक कहता है मर्द देखो मैं ईश्वर हूँ। औरत देखती है उसे और ईश्वर को खो देने की पीड़ा से बिलबिलाकर
फेर लेती है अपना मुंह। एक है पीछे। चलते चलते अचानक ही पलट कर देखा पीछे, न कोई सड़क थी, न मैदान, न वो शहर, न वे घर, न वे जगहें, न वे लोग जहाँ से वह शुरू हुई थी। चलते चलते अचानक ही पलट कर देखा पीछे, न कोई सड़क थी, न मैदान, न वो शहर, न वे घर, न वे जगहें, न वे लोग जहाँ से वह शुरू हुई थी। कहीं कुछ भी नहीं था पीछे, जैसे वह जो जीवन जीती गई कोई पूछता चला गया हो। लगे हाथ। हमारे मित्र नवीन सागर जी, ये बहुत ही प्रिय कविता हुआ करती थी। यह एक समय है जब कोई भी तय नहीं कर पाता कुछ भी, यह भी नहीं कि उसे दरवाज़ा खुला रखना चाहिए या बंद। यह एक समय है जब कोई भी तय नहीं कर पाता कुछ भी, यह भी नहीं कि उसे दरवाज़ा खुला रखना चाहिए या बंद। हर बार दरवाज़ा खोलते हुए थोड़ा सा हिचकिचाता है हाथ। अक्सर तय नहीं कर पाती कि मैं दरवाजे के इस तरफ हूँ या उस तरफ। बहुत अच्छी कविता है। एक आज बहुत छोटी सी 2 कविताएं हैं। सपने में था समुद्र, समुद्र में लहरें, लहरों में मछलियाँ, लहरों को पहने लहराती हवा में। सपने में था समुद्र, समुद्र में लहरें, लहरों में मछलियाँ, लहरों को पहने लहराती हवा में। उजगता आसमान लहरों से, कितने आसमान, लहरें कितनी समुद्र में। एक और कविता है गड्ढे। खुदे पड़े गड्ढे ही गड्ढे लगातार बहते समय में, न भरते समय से न बहते समय में, समय के साथ साथ तैरते समय में, हर गड्ढे में लगाता कूद समय, खुदता ही जाता गड्ढा, समय के साथ साथ समय के भीतर लगातार धंसता समय। वाह, इसका शायद बचपन के बिंबों से। हाँ, ये कुछ और जैसे डगाल पकड़ के झूलने का जो एक होता है कि बचपन में पेड़ पे नहीं भी चढ़ते तो भी नीची वाली डगाल पकड़ के झूलने का एक जो, तो पेड़ के साथ अगर आप ज़्यादा रहे हैं तो वो वाले अनुभव भी। तो किस चीज़ के साथ आप कैसे रहे हैं, पहाड़ के साथ रहे हैं तो वो कैसे संबंध बने? हाँ, मतलब ये बहुत दिलचस्प बात है ना कि आदमी हो सकता है कि बहुत लंबा समय कहीं और भी बिताए, पर दरअसल वो शायद बहुत दूर तक अपने बचपन के लैंडस्केप में ही रहता आता है। एक मैं भी इसमें मैंने पता नहीं लिखी नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, हम लेकिन प्रवासित भी नहीं रहे ना, हाँ, कांटेक्ट बना रहा लगातार। तो लेकिन एक कविता कुछ ऐसी थी जो मतलब तुम जैसे कह रही हो, तो कुछ ऐसा एक अनुभव कि बहुत दूर ऐसी चीज़ें चली जाती हैं और कैसे आप मतलब नहीं हाथ में आ जाएगी जरूरी नहीं है। हाँ, जैसे ये है एक पिछले 20 वर्षों से रहते हैं वे लगभग शहर के ऐन बीचों बीच। पिछले 20 वर्षों से रहते हैं वे लगभग शहर के ऐन बीचों बीच। फला गली के फला मकान में खाते पीते सोते, लोगों से मिलते हुए पिछले 20 वर्षों से इस ख्याल के साथ कि जाना तो है ही एक दिन। जीता है वो अब भी उसी घर में जिसका कोई कोना ऐसा नहीं निश्चिंत हो फैला सके जहाँ अपने बेतरतीब आप को। घर के सार्वजनिक खुलेपन में दबा रहता है वह अपने नीचे, मगर जीता है अब भी वहीं। थक कर लौट जाती है वह भी बचपन के उस रेगिस्तान में, खोजती है बित्ते भर हरे मैदान को उस शहर में, यहाँ मरते हैं वे उस घर में थोड़ा थोड़ा रोज। एक इंतज़ार है पिछले 20 वर्षों से, कितने मकान हैं, कितने शहर में, कितने घर, कोई नहीं जानता। हो सकता है कोई जिए इस घर में यहाँ से चले जाने के कई वर्षों बाद। चरमराते तखत पर लेटे लेटे रात बहुत देर तक सोचते रहे वे करवट बदलने के बारे में।
चरमराते तखत पर लेटे लेटे रात बहुत देर तक सोचते रहे वे करवट बदलने के बारे में। उनके लिए करवट बदलने से आसान था उसके बारे में सोचना। अपने से अलग रखा जा सकता था घर को सोचते हुए। करवट बदलने पर हड़बड़ा सकता है घर, घिर आ सकता है तखत के गिर्द। वे चाहते थे तखत कम से कम दे अपने होने का प्रमाण। इसके लिए जरूरी था उनका बहुत देर तक एक करवट सोना, और इसके लिए जरूरी था बहुत देर करवट बदलने के बारे में सोचना। एक और कहता है पृथ्वी से बाहर। अभी अभी घसीट लाई थी हवा बादलों को, अभी अभी उड़ा ले गई अपने साथ। पीले उजाले में चकित हरे पेड़, सफेद मुंडेरे, सुर्ख गुलमोहर, सलेटी एंटीना की भीड़। पूरे दृश्य को पतंग की तरह उड़ाती भागी जा रही थी लड़की, जैसे पृथ्वी से बाहर निकल कर ही दम लेगी। हवा के लिए असंभव था मगर पृथ्वी से बाहर जा पाना। एक कही था पैर, कुछ कई हाथों और पैरों का कुछ ऐसा खास अलग से ध्यान कभी कोई अनुभव कर। पैर खड़े थे असमंजस में, चले कि खड़े रहे। पैर खड़े थे असमंजस में, चले कि खड़े रहे। सोच में पड़ गए वे चलने से पहले। चट से उठते थे और चलने लगते थे बचपन में। नहीं होती थी कोई निश्चित वजह चलने या खड़े होने की। पैरों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वे सोचने लगेंगे। बड़ा सरप्राइज दी थी आगे पंक्ति ने। सबसे पहले शुरू होता है माँ का दिन मुँह अंधेरे और सबकी बात तक चलता है। छोटी होती है माँ की रातें नियम से और दिन नियम से लंबे, रात में दूर तक धंसे हुए। छोटी होती है माँ की रातें नियम से और दिन नियम से लंबे, रात में दूर तक धंसे हुए। इसे कोई भी दिन की घुसपैठ नहीं मानता। माँ की रात में पैर सिकोड़ कर रोज सोती है गुड़ी गुड़ी माँ। बची खुची रात में पैर फैलाने लायक लंबी भी नहीं होती माँ की रात। इस तरह निकली घर से जैसे कभी लौटना न हो, नहीं देखा पलट कर। इस तरह निकली घर से जैसे कभी लौटना न हो, नहीं देखा पलट कर। हो सकता है धर दबोचे घर, हो सकता है लील जाए, हो सकता है घिसटता चला आए पीछे पीछे। होते रहे पीछे कुछ भी करता हुआ घर, आगे वह थी अपने आगे आगे। क्या बात है। छूता है तुम्हारा हाथ अभी भी उसी तरह, यही एक बात है तुम्हारी तरफ। यह एक वजह हो सकती है देह और हाथ के बीच किसी भी चीज के न टिक पाने की। इसी तरह अलग हुई रही अलग अपनी देह से। अब अगर साथ रहना हुआ तो होगा इसी की वजह से। हाथ एक और है। हाथ पड़ा था कंधे पर और भूल गया था कि वो वहाँ है। हाथ पड़ा था कंधे पर और भूल गया था कि वो वहाँ है। हाथ को पता नहीं था कि वह उसका है या पति का। दुविधा में था हाथ कि वो कंधे पर है या नहीं। दूसरा हाथ नहीं बता सकता कुछ भी पहले हाथ के होने या न होने के बारे में। हाथ एक और कहता है, हाथ को पता नहीं चला वह कब और कैसे मरा। हाथ को पता नहीं चला वह कब और कैसे मरा। एक दिन मरा पाया मैंने अपने हाथ को। उसे हटाया वह हटा नहीं, उसे दबाया वह दबा नहीं, उसे काटा वह कटा नहीं। जब जलाया जला नहीं, हिलगा रहा कंधे से उसी तरह। थी कहीं देह में सोने की तरह छिपी हुई देह के पीछे, होते होते अचानक न होती हुई निकल आई सतह पर, घूमती हुई फिरकनी सी अधर में उठती हुई। थी कहीं देह में सोने की तरह छिपी हुई देह के पीछे, होते होते अचानक न होती हुई निकल आई सतह पर, घूमती हुई फिरकनी की तरह अधर में उठती हुई। इसका ही दूसरा है देह। तुम्हारे आने से पहले अभी अभी एक नाम थी उसकी देह भवसागर में।
तुम्हारे आने से पहले अभी अभी एक नाम थी उसकी देह भवसागर में, अभी अभी हुई पहली बार देह, थिरकती रही देर तक, होने न होने के बीच होती हुई देह। हाँ, एक कविता है इस तरह। बिस्तर से उठकर वापस लौटने तक आज मिली मित्रा, बंटू, कस्तूरीबाई मुखर्जी साहब और शशि से, नहीं शशि की दोस्त से। बस से उतरते समय नीचे खड़ी उसने खुशी से उछलकर पकड़ लिया था उसका हाथ। तुम शशि हो ना? शशि वह नहीं थी। फिर भी इनकार फिर भी नहीं कर पाई थी शशि होने से। जिन लोगों से मिली उनमें से कुछ को पहचाना, कुछ को सिर्फ दर्ज किया, जैसे वह भौचक का लड़का। कहाँ था वह? दफ्तर में, किसी सिनेमा में, पोस्टर में। इतना भौचक का था लड़का कि जगह जहाँ वह था छिप गई थी उसके पीछे। सब्जी खरीदने मोहल्ले में निकली, कई दिनों बाद सुनाई दी थी कालू की आवाज़। महंगी मगर ताज़ा सब्जी देने के बाद सौगात की तरह देता थोड़ा सा धनिया और मिर्च। अरे कहाँ थे तुम इतने दिन? खुश होकर पूछा उसने। गठिया से परेशान था, झेपते हुए सब्जी तोड़ने लगा वह। मोहल्ला बहुत बड़ा था और कालू अपने घर से अधिक रहता था मोहल्ले में। 30 से अधिक का नहीं हो सकता अभी कालू। नियम वाले काम हुए नियम से, एक भी नहीं छूटा। पेड़ के पास बैठकर सब्जी काटी, काटते काटते चाय पी। तय नहीं कर पाई कि पेड़ अधिक मशगूल था या वो। छत पर गई, बहुत दिनों बाद चखा धूप का स्वाद। दफ्तर गई, अपने नाम आने वाली मराठी अखबार से 4-5 शीर्षक पढ़े, एक आध छोटा समाचार विस्तार से पढ़ डाला। इस तरह मराठी का अभ्यास किया। 3 चिट्ठियां लिखी, सरकार को आवेदन भेजा। दिन भर किए कामों की फहरिस्त मित्रा को सुनाते हुए थकान महसूस की। लेटने के बाद बिस्तर पर लौटते हुए छूट गई हर बार की तरह अपने से 2 कदम दूर। बिस्तर पर लौटते हुए छूट गई हर बार की तरह अपने से 2 कदम दूर। इस तरह मीलों दूर चली गई अपने से, दूसरे लोक में जाने की तरह। संदर्भ से। ऊपर कब जाएंगे वे पूछ रहे थे, सबसे ऊपर की मंजिल पर थे हम, जैसे दुनिया से बाहर हूँ। ऊपर कब जाएंगे पूछ रहे थे वे, सबसे ऊपर की मंजिल पर थे हम, जैसे दुनिया से बाहर हूँ। खिड़की के बाहर था समुद्र की तरह पूरे आसमान को थामे इकलौता एक पीपल। खिड़की के बाहर था समुद्र की तरह पूरे आसमान को थामे इकलौता एक पीपल। सीढ़ियाँ चढ़कर नहीं आए थे ऊपर, हो सकता है चढ़ना उतरना भूल चुके हों अब तक उनके पैर। पहले ही पता चल गया होगा पैरों को कि ऊपर जाने के लिए उनका चलना जरूरी नहीं। एक और। पिता चले जाएंगे वे एक दिन, उसे पता था। उस दिन भी जब दरवाजे के उस तरफ से इस तरफ खड़ी उसे देखते हुए वे बोले थे, तुम्हारे चेहरे में कुछ है मेरा। चले जाएंगे वे एक दिन, उसे पता था। उस दिन भी जब दरवाजे के उस तरफ से इस तरफ खड़ी उसे देखते हुए वे बोले थे, तुम्हारे चेहरे में कुछ है मेरा। दरवाजे के उस तरफ अब नहीं है वे, उसके चेहरे में बचे हैं थोड़े से अब भी। साइकिल सवार और स्त्री। साइकिल सवार की पीठ पीछे हवा में पैर उछाले बैठी स्त्री के वहां होने का पता जरूरी नहीं कि साइकिल सवार को हो ही। हवा में पैर उछाले ऐसे बैठी थी स्त्री जैसे हवा उसे उड़ा रही हो। झड़ते झड़ते ठहर गए पत्ते सी थमी थी स्त्री अपने आप साइकिल की पिछली सीट पर। उसके थमने की ही तरह कभी भी शुरू हो सकती थी झड़ते झड़ते उसके उड़ने की या उड़ते उड़ते झड़ने की प्रक्रिया। एक साथ साथ आईने में। इस तरफ थी वह दरवाजे के, साथ साथ आईने में झांकते मकान और आसमान उस तरफ। इस तरफ थी वह दरवाजे के, साथ साथ आईने में झांकते मकान और आसमान उस तरफ। अंतहीन उजले आसमान में धमकी की तरह इकलौता एक अंधेरा मकान। एक
कहता है रोज रोज एक जंगल था, जंगल में एक चिड़िया थी, रोज रोज एक ही पेड़ पर बैठती थी जबकि सारा जंगल पड़ा था। एक जंगल था, जंगल में एक चिड़िया थी, रोज रोज एक ही पेड़ पर बैठती थी जबकि सारा जंगल पड़ा था। कभी कभी होता उसका घर किसी पेड़ पर या किसी टांड पर। उसी पेड़ पर बैठे याद नहीं आता उसे कि कभी घर बनाया था इसकी सबसे ऊंची डगाल पर। उसी पेड़ पर बैठे याद नहीं आता उसे कि कभी घर बनाया था इसकी सबसे ऊंची डगाल पर। जितना होता उससे अधिक नहीं होता उसका घर। निहोरा। वह गिना रहा था, वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगा, नक्षत्रों में मार्गशीर्ष। वह गिनाता जा रहा था और वह मनाती कि बस एक उसे भूल जाए। सुगंधों में मिट्टी की सुगंध। नसरीन की तर्ज पर उससे निहोरा करने को तैयार थी वह कि सारे रंग तुम ले लो, बस काला और सफेद छोड़ दो मेरे लिए। उससे एकदम उलट दिशा में भागते सह्याद्री के पहाड़ों में सुबह सुबह धरती के उड़ने की आशंका। उससे एकदम उलट दिशा में भागते सह्याद्री के पहाड़ों में सुबह सुबह धरती के उड़ने की आशंका। रोज से उड़ी फुलचुक्की की देह में धरती का लाघव। पृथ्वी पर पड़ती अपनी ही छाया में धरती के लौट आने का भाव। पृथ्वी पर पड़ती अपनी ही छाया में धरती के लौट आने का भाव। बहुत अच्छी। छाया न डालते हुए धूप की तरह लगातार खिसकता समय किसी भी चीज में लगातार अपनी छाया न डालते हुए बीत जाता। किसी भी चीज से अपने बीतने का पता चीज को चले इससे पहले। उसके सपने की छाया सरसराती उसकी नींद में। उसके सपने की छाया सरसराती उसकी नींद में। सपने का वह उसे छूता सपने की छाया में रोशनी की तरह। जहाँ खड़ी हुई, पेड़ के नीचे खड़ी हो रही हूँ सोचकर खड़ी नहीं हुई थी पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे खड़ी हो रही हूँ सोचकर खड़ी नहीं हुई थी पेड़ के नीचे। चलते चलते जहाँ खड़ी हुई वह जगह पेड़ की छाया थी। पृथ्वी पर खेलती आसमान में खेलते पेड़ की छाया। पृथ्वी पर खेलती आसमान में खेलते पेड़ की छाया। पृथ्वी से पहले खेलती उसकी देह पर जैसे वह फिसल पट्टी हो। बहुत अच्छी। ये है। निराला सजन पीछ। छूटी हुई जगह कढ़े हुए से अधिक कड़ी थी छूटी हुई जगह। कढ़े हुए से अधिक कड़ी थी छूटी हुई जगह। वह अपने केशों को वस्त्र की तरह पहने बैठी थी, घुटनों पर हाथ बांधे अपनी ही बाहों से घिरी। अपने केशों को वस्त्र की तरह पहने बैठी थी, घुटने पर हाथ बांधे अपनी ही बाहों से घिरी। लिखत की तरह अपने को स्लेट की तरह थामे खड़ी थी रात। अपने को स्लेट की तरह थामे खड़ी थी रात। सफेद लिखत की तरह उड़ता आ रहा था दिन रात के अतल से। ये तीन एक कविताएं जो इधर की हैं उनमें से हैं। पीठ। महीने की सबसे अंधेरी रात में लौटते समुद्र की पीठ से उसे अपनी पीठ की याद आई। महीने की सबसे अंधेरी रात में लौटते समुद्र की पीठ से उसे अपनी पीठ की याद आई। अपनी पीठ को उसने कभी नहीं देखा। अपने को उस तरह पीठ से नहीं जानती थी जिस तरह उदय को जानती थी। अपनी और पीठ किए अपने आगे आगे चली जा रही वह जरूरी नहीं कि अपने को पहचान ही ले। कल होगा, रोका नहीं जा सकता कल को होने से। कुछ भी हो सकता है कल को,
हो सकता है चलने फिरने लगे पेड़ पौधे मकान, हो सकता है चलते चलते खड़े के खड़े रह जाएं हम अपनी अपनी जगह, उड़ने लगे खेत नदियां और पहाड़, फूट निकले कोपले हवा में। हो सकता है कल को अलोप हो जाए पूरी दुनिया, दिखने लग जाए कल से मृत्यु आत्मा और ईश्वर। संभव है कल को भूल जाए हमें अपनी भाषा, समझ न आए बात किसी को किसी की। बहुत अच्छी है। My first encounter with Jyotsna Milan's poetry was quite a few years ago, probably about 25 years ago, when I was sitting in the library of the Sahitya Sammelan, looking through old issues of Nai Kavita magazine. And I suddenly came across these gems of poems, these meditations, these spiritual experiences of a poet whose name I had never heard about. And this really stirred my curiosity. I wanted to find out more about her. And I was really fortunate that I was able to meet her and enjoy her hospitality and the hospitality of her family in Bhopal. And we had plenty of opportunities to have long conversations about her life and about her poetry. And we also recorded an interview which was published in Hindi in her book Kehte Kehte Baat Ko. Rajula, could you please show the book so that people Yes. can see it? This is the book. Yes. And we also have an English translation of this interview, which was published in this magazine, Hindi Language Discourse Writing. This is volume 3, number 1 of April, June 2002. And there are also some translations of her poetry there too.
So what I would like to do today is, I'm very grateful to Rajula for giving me this opportunity, really, to share my thoughts about Jyotsna's poetry and my translations of some of my favorite poems by her, which I published in my book, New Poetry in Hindi, in 2002. So. Thank you, Lucy. It was great to find you after so many years. I'm Yes. so glad that, we could locate you and have you here to say something about her, because I remember that she had very fond memories of your conversation with her, and very fond of that also. And I think she felt as a poet also understood in a very different and nuanced way with the work that you did with this book. So it's great. It's amazing to see you here. Really very happy. Thank you for your kind words. And I still feel that this was my encounter both with Jyotsna Ji and her poetry has been such a wonderful, enriching, amazing experience for me. And her poetry is still with me. I still, when I was preparing for this and I looked through her poems again, they still touch me in a most profound way. And I'm really glad that we have this opportunity to do this for her, because hopefully it will encourage more people to find her poems. And I hope they will give as much pleasure to our audience as they gave me. And not just pleasure, but also wisdom and solace. And yeah, they've been one of the most wonderful gifts in my life. So I would like to give some of that back or make it more available. Thanks. So with Jyotsna Milan's poetry, we enter a world where creative writing is not a favorite pastime, not merely an inner urge, but the condition for the poet's existence. From a very early age, writing gave Jyotsna Milan the courage to enjoy her life, despite the domestic drudgery that was obligatory for a girl of her generation. I think in her interview, she said to me that she started writing when she was 10 or 12 years old, so she started really young. In her own words, "Mother taught me all the household chores, from cooking to sewing and knitting, and I still do them. Whatever I may be writing, poems, stories, novels, afterwards I can do the work I don't like with some interest, as long as I'm writing something. In fact, I write very little, but even so, I don't know what I would have done without writing." So Jyotsna's childhood was ruled by two forces: a traditional mother who wanted her daughter to learn all the skills of a successful housewife, and rather unusually for that generation, a progressive father who, being a writer himself, encouraged her to write. And again, in her interview, she talked a lot about all the books which were available in the house, the conversation she was having with her father about what people were reading at that time, and books in different languages. Her father was extremely influential in the creation of her identity as a poet. He was her first reader and helped her build an unshakable belief in the value of poetry. Unlike many female poets of her generation and before, Jyotsna grew up with a confidence in her creative abilities, enhanced also by her education. Her master's in Gujarati literature was followed by one in English literature. Exposed to both Hindi and Gujarati as a child, she was creative in both languages. Jyotsna Milan accepted the traditional life choice for a woman as a wife and a mother, and married a fellow poet, Ramesh Chandra Shah. But she also remained loyal to her first love, the written word, and published collections of short stories, novels, and volumes of poetry. She also wrote about and translated Gujarati poetry, and for a long time edited the women's journal Anasuya,
published by the Self-Employed Women Association, SEVA. The uneasy symbiosis between Jyotsna Milan's inheritance from her mother and that from her father is reflected in all her writing. She's painfully aware of the patriarchal restrictions, and much of her poetry speaks with an eloquent feminist voice. And I would like to kind of mix my thoughts with the poems I translated. Okay. And just as an example of what I would say is perhaps the most forceful feminist, or one of the most forceful feminist statements I have come across in Hindi poetry, I would like us to read her poem, Aurat, Woman. And Rajul and I thought that it would be nice for us to read both the Hindi and the English. Let's do So that. would you do the Hindi version of it, and then I'll do the English. Okay, I'll read the Hindi first. औरत. प्यार के क्षणों में कभी कभी ईश्वर की तरह लगता है मर्द औरत को. प्यार के क्षणों में कभी कभी ईश्वर की तरह लगता है मर्द औरत को. ईश्वर ईश्वर की पुकार से दहकने लगता है उसका समूचा वजूद. अचानक कहता है मर्द, देखो मैं ईश्वर हूँ. औरत देखती है उसे और ईश्वर को खो देने की पीड़ा से बिलबिला कर फेर लेती है अपना मुंह. Woman. In moments of love, sometimes man seems like God to the woman. The cry, God, God, sets her whole being aflame. Suddenly, he says, look, I'm God. She looks at him and, pained by the loss of God, turns her face away. Beautiful. Even though Jyotsna Milan did not call herself a feminist poet and did not set out to be one, woman's experience is unmistakably the prism of her creativity. Many of her poems reflect different aspects of woman's life. The sacrifice of motherhood, which we'll see in the poem Night we are going to read in a minute. The shackles imposed on women, as we'll see in the poems Feet and Constantly. The cruel erasure of women's personal history, as in the poem Behind. Woman's loneliness, as in She, and the emptiness and meaninglessness of her existence, as in the poem Words. And now it would be really nice to actually go through these poems and just give people a taste of what feels to me really a very rich and honest and painful exploration of what woman's life is like. So we will start with the poem Raat, Night. रात. सबसे पहले शुरू होता है माँ का दिन. सबसे पहले शुरू होता है माँ का दिन. मुंह अंधेरे और सबके बाद तक चलता है. छोटी होती है माँ की रातें नियम से और दिन नियम से लंबे, रात में दूर तक धंसे हुए. इसे कोई भी दिन की घुसपैठ नहीं मानता माँ की रात में. पैर सिकोड़ कर रोज सोती है बुढ़ी मुड़ी माँ बची खुची रात में. पैर फैलाने लायक लंबी भी नहीं होती माँ की रात. Night. A mother's day begins first at the crack of dawn. It ends last. Mother's nights are always short, her days always long, stealing into the night. Nobody considers this to be a day's trespassing into the mother's night. Every day she sleeps with legs drawn in, a crumpled mother in the leftover night. Mother's night is not long enough even to stretch out. Shall we move to
feet. Yes. पैर, खड़े थे पैर असमंजस में, चलें कि खड़े रहें। सोच में पड़ गए वे चलने से पहले। चट से उठते थे और चलने लगते थे बचपन में। नहीं होती थी कोई निश्चित वजहें चलने या खड़ी होने की, चलने या खड़े होने की। पैरों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वे सोचने लगेंगे एक दिन। Feet. The feet stood in hesitation. Should they go or stay? Lost in thought before moving. They used to lift instantly and start walking. In her childhood, there were no fixed reasons for going or staying. The feet had never imagined that they would start thinking one day. And I feel that this theme of being shackled is continued by the poem Lagata constantly. लगातार एकाएक अपने पैरों को देखा तो भर उठी दहशत से। एकाएक अपने पैरों को देखा तो भर उठी दहशत से। बरसों पहले जहां गाड़ा गया था वहीं खड़ी थी मैं। जिसका जो मन आया टांगता चला गया, थैला, टोपी, अंगोछा या अपनी थकान। और लगता रहा सारे वक्त कि मैं चलती रही हूँ लगातार। Constantly. Suddenly, I looked at my feet and was filled with dread. I was still standing where years ago I had been planted. Everybody hung on me whatever they fancied: a bag, a hat, a towel, or their tiredness. And it seemed to me that all this while I was on the move constantly. The next poem we were thinking of reading is a very powerful statement about the erasure of women's experience. It's the poem behind. पीछे चलते चलते अचानक पलट कर देखा। पीछे न कोई सड़क थी, न मैदान, न वो शहर, न वे घर, न वे जगहें, न वे लोग जहां से वह शुरू हुई थी। कहीं कुछ भी नहीं था पीछे, जैसे वह जो जीवन जीती गई कोई पोंछता चला गया हो लगे हाथ। Behind. Stopping midway, she turned and looked. There was no road, no field, nor the town, houses, places, people of her birth, no trace of anything, as if someone had been carefully wiping out the life she lived. Then we have a beautiful poem about loneliness, such a powerful image in so few words. The poem She. वह अपने केशों को वस्त्र की तरह पहने बैठी थी, घुटनों पर हाथ बांधे अपनी ही बाहों से घिरी। She. Wearing her tresses like a garment, she was sitting, hands joined on her knees, embraced by her own arms. And then I feel that the last two poems I mentioned, words and meaning, talk about how difficult it is to find any meaning in this kind of existence, really. Yeah. शब्द Shall we start? Yeah, words.
आंख मूंद कर घुमाती है पेंसिल, खींचती है एक लकीर, घिर आता है भीतर इतना सारा शून्य। ढूंढती है वह एक शब्द समूची भाषा में उसके खिलाफ। Words. She closes her eyes and, moving the pencil around, draws a line. How much void is encircled within? She seeks for a single word in the entire language to fight it. It's beautiful translation, Rishi. Shall I read अर्थ ना? Yeah, if you could. अर्थ। रोटी के उस दुख से कभी सांप का नहीं पड़ा, रोटी के उस दुख से कभी सांप का नहीं पड़ा। जब जीवन का रोटी के अलावा कोई अर्थ नहीं बचता, उस दुख को थोड़ा सा जानती हूँ। जब शरीर में पगी आत्मा उधड़ने लगती है और जब जूझते हुए शरीर के लिए रोटी का भी कोई अर्थ नहीं बचता। Meaning, I have never experienced the grief of the breath when life has no meaning but breath. I know that grief a little when the soul steeped in the body becomes undone, and when for the struggling body even breath loses its meaning. Woman's search for a true home is a recurring motif in Jyotsna Milan's writing, and so is an exposure of the real nature of what is perceived to be woman's home, nothing but an enclosure where women are locked in domestic drudgery. So the next two poems we are going to read, Some Other Place and Search, exemplify this motif. Its centrality in Jyotsna Milan's writing is reflected by the fact that the name of one of her collections of poems is Ghar Nahi, not a home. Let's have a look at these two poems. Shall we start with Some Other Place? Okay. किसी दूसरी जगह। पहले ही दूर चली गई घर से, किसी दूसरी जगह जाने की तरह, कि लौट आए घर लौटने की तरह। It is amazing, only 6 lines. Yes. Some other place. She went far from home, as if going to some other place, so that she might return, as if returning home. तलाश। जलाती है गैस, बनाती है चाय, करती है घर को साफ, बदलती है बदरंग चादरें। आते हैं लोग, कहते हैं आपका घर लगता है सचमुच का एक घर। देखती है वो चकित अपने घर को, घूमती है कमरों में, घूमती है एक घर। मिलता है एक कमरा, सोफा, तखत, कुर्सियां। एक और कमरा भी, बिस्तर, चटाइयां, मशीनें। घेर लेती हैं तमाम चीजें, होती है वह किसी एक कमरे में, और आत्मा आवारा भटकती है घर की तलाश में, जैसे किसी की न हो। Search. She turns the gas on, makes tea, cleans the house, changes the faded sheets. People come and say, "Your house really feels like home." Astonished, she looks at her house, wanders in the rooms, looks for a home. Finds a room, sofa bed, chairs, another room, bed, mats, appliances. All these things enclose every room where she is, and her soul, astray, roams about in search of home,
as if it is no one's. It is hardly surprising then that many of Jyotsna Milan's poems are imbued with a yearning for freedom. And we are going to read some of these poems in a minute. Poems like Together in the Minute and Sky. Sorry, I'm just turning my page here. Oops. Nature is the doorway to freedom in her poetry. This reflects her personal experience. And again, I have a little quotation from her interview. I had to help my mother in the kitchen a lot of the time, but my mind used to wander off. I would not hear what my mother said and was often scolded for this. A parallel world would be born inside me, around me, like magic. Whatever was around would become part of me, or I would become part of it, be it darkness or sky or tree or wind. Words would flash in my inner darkness. I would follow them. It would be like a game. Sometimes I would catch them. Sometimes they would catch me. This intensity of experience, a sense of mystical communion with nature, the desire to discover by becoming the thing, is characteristic of About Being This Way, which we're going to read last, and in much of Jyotsna Milan's writing. Nature and poetry heal the wounds of the suffering woman. They're her refuge, her sustenance. This merging with nature, the disappearing of boundaries, the erasure of the self in her poetry, are reminiscent of the oneness postulated in the Upanishads. She yearns for aloneness where there is nothing, to such an extent that one's being too disappears. And I would like us to just have a taste of a few poems which really give us this experience, a very spiritual experience of merging, of becoming one with nature. Shall we start with Together in the Mirror? Okay. साथ साथ आईने में इस तरफ थी वह दरवाजे के, साथ साथ आईने में झांकते मकान और आसमान, उस तरफ अंतहीन उजले आसमान में धमकी की तरह अंधेरा, एक इकलौता मकान. Together in the Mirror. She was on this side of the door, on that side, peeping into the mirror together, house and sky. In the boundless, radiant sky, a single dark house, like a thread. This is so interesting. It so connects with our previous theme of talking about what is home and how home is not a house. It's not this dark silhouette which imprisons you, but the experience of being one with the boundless radiant sky. It's a beautiful poem. Beautiful, this is. And to continue with the image of the boundless radiant sky, shall we next look at sky? Okay. आसमान बैठी रही साल दर साल अपने भीतर, देखती रही खिड़की के पार आसमान को. घुस आया एक दिन कमरे में, बोला उड़ो. घूम घूम कर देखती रही वह आसमान को, जो घर के बाहर भी था और भीतर भी. Sky. She sat year after year inside her own self, kept looking through the window at the sky. One day, it entered the room and said, "Fly." Turning round, she kept looking at the sky, which was both outside the house and inside.
such a beautiful meditation on, well, the experience of oneness with nature, but also the experience of finding freedom in oneself, finding this boundless radiant sky in oneself, whatever the external circumstances, even within the prison of the dark house. Yep. Yeah. And one of the most powerful of these meditations, I find, about being this way, which will be our last poem for today. इस तरह होने के बारे में पहले पेड़ और मैं साथ साथ थे, हमने सोचा ही नहीं कभी अपने इस तरह होने के बारे में। हम इसी तरह थे शुरू से, हमारे इस तरह होने में हमारी कोई भूमिका नहीं थी, मगर इससे पहले कभी पता नहीं चला कि हमारा यूं साथ साथ होना हमारे हो सकने की शर्त, हमारे हो सकने की शर्त है। About being this way. Before, Tree and I were together. We never even thought of our being this way. We were this way from the beginning. We played no part in our being this way. But previously, we never realized that our being together in this way is the condition for our being. Which kind of brings us almost in a full circle to the beginning of me saying that to Jyotsna-ji, poetry and nature are the conditions of her existence. They're not just, Yes. Nice pastimes, Yes. but really, really important foundations of life for her. So Jyotsna Milan did not publish much. The relentless critic inside her convicted much of her writing to life imprisonment in her many notebooks. More importantly, her duties as a wife and a mother and her work for Seva did not leave her much time for writing, but her slim volumes are a rich testimony to woman's experience, to her pain, oppression, suffocation, loneliness, deprivation, but also to her invincible soul. And I suppose this is why her poetry is so important to me, because it has all. It's a very honest, statement of all the painful experiences of being a woman, but also is full of hope, it's full of beauty, it's full of I can't find the right words of. There's a Western Buddhist thinker who talks about the human existence as the full catastrophe, and she has that in her poetry. She has the full catastrophe, the unbearable beauty of what it is like to be human and to be a woman, both. And as I said, her poetry has been an enormous gift for me, and I hope people will find out about it and it will become part of their lives too. And I would like to thank everybody who is listening to this for taking the time to listen to us sharing some of our thoughts and experiences. And yeah, thank you very much. Thank you very much for coming here, giving this window into, because your book is of course there, and I also came across another reprint of some of your articles, which is also about Hindi women poets, where your title is also Not a Home, and you are narrating home through all the poets you have selected, and it was a wonderful reading. Today only actually I read it. So I think that it would be really nice if this series that is happening
can bring more aspects of what you have brought out in the way a writer should be remembered, perhaps. Thank you. Thank you for your very kind words. And as I said to you before we started recording, my work with Hindi poetry has been really, I have been very lucky that because I'm an outsider to this world. It's given me some distance, some perspective, some freedom, and it has allowed me to really talk about the poems and the poets who have touched me deeply. It's been more than an intellectual exercise for me. That's actually very clear from your book as one reads through that, because sometimes we wonder that, from outside, and you are also, even otherwise, when we first met you, I remember that you were coming from Bulgaria and doing your work on Hindi poetry. That itself was very, made us very curious to understand how somebody from Bulgaria can be attracted to Hindi and Hindi poetry from so far, and what are the connections there. So, yeah. And I think what you've done here in this book, more than the translation and selections of these poets, is a very important theorization of Nai Kavita, which is sort of, rereading history and doing it from a subjective point of view, which brings out and connects some threads which have been lost earlier. And I think it's an important work, and it should also be brought into light once again. Though I know that you have moved out of this field into something else now, but the work remains, isn't it? That's right. It's right. I have moved out of this field, but the gift of poetry has remained with me too. And the gift of meeting you and Jyotsna-ji and very many wonderful people while I was working on the book. So it's been a very important part of my life, which has stayed with me, has made me the person I'm now. And I'm very grateful for that. So beautiful. Thank you. Thank you. Thank you, Lucy.